अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। अनूप सोनी, अभय देओल, वेलकम टू बोल बेबी बोल। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक है। अभय देओल के साथ काम करना या अभय देओल के साथ इंटरव्यू करना, इट्स लाइक बीइंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अभय, कैसे रहते हैं आप? It is like a long distance relationship. I'm on the other side of the world right now, तो long distance तो है ही ना। Yeah, बस exactly. यही कहना चाहूंगी कि लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में किसी ने कहा था, एंड आई थिंक दैट दैट्स ट्रू। लॉन्ग डिस्टेंस इज रॉन्ग डिस्टेंस, इट्स द वर्स्ट डिस्टेंस। और terrible one. टेरिबल। चलिए, yeah. आज ऑफ कोर्स वे हियर क्योंकि हम एक बहुत ही एक्साइटिंग शो के बारे में बात कर रहे हैं। डिज्नी हॉटस्टार पर आ रही है बहुत जल्द, एंड दिस वंस कॉल्ड 1962 वॉर इन द हिल्स। अब आई थॉट विल बी ग्रेट कि हम ये ट्रेलर जो रिलीज हुआ है यूट्यूब पर, there have been so many views, but more importantly what I realize is इतने सारे reactions आए हैं लोगों के। जाहिर सी बात है, it's a part of modern या recent history. So let me start off with some of the comments that I found most interesting and maybe get your reactions on the same. Is that cool? Yeah, Anup. Yeah. No objection. No objection, my lord. ठीक है। तो सबसे पहले जो कमेंट आया है ये कृष्ण राव एमवी की तरफ से है। इन्होंने कहा, my grandfather survived this war. So let's start with this as the first thing about the show. Interesting बात है क्योंकि it's so recent as a part of our history, तो बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट करता है। Abhay, let me ask you this. Do you have someone in the family या आपके परिवार में जिन्होंने कभी भी ये कहानी आपको सुनाई थी? I do have family in the army from my mother's side, but I didn't fight in that war specifically, no. जी हाँ। अनूप जी? नहीं, अनूप इज गुड। जी की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ये कहानी अपने फैमिली से तो नहीं सुनी। मेरे भी एक्सटेंडेड कजन्स हैं जो आर्मी में हैं, नॉट लाइक वन ऑफ माय फर्स्ट कजन इज इन द आर्मी राइट नाउ, बट एक्सटेंडेड कजन ज्यादा हैं। बट यस, मैंने इस कहानी के बारे में व्हेन आई वाज स्टडीइंग स्कूल कॉलेज के दौरान ही पढ़ लिया था इसके बारे में, इस कहानी के बारे में। प्लस आई रिमेम्बर सीइंग दिस फिल्म कॉल्ड हकीकत, जो कि जिसमें धर्मजीत थे और बलराज साहनी साहब थे। चेतन आनंद की फिल्म थी हकीकत। तो इस वॉर के बारे में पता था। जी हाँ। एक्चुअली पहली बार जब मुझे, क्योंकि आपने पहले कह दिया है in the trailer that it's inspired, and it's not really based on, so there's a lot of things that can be put to rest because of that. But मुझे याद है कि पहली बार as a student जब हमारी टीचर हमें एक्सप्लेन कर रही थी इसी घटना के बारे में, उन्होंने कहा था कि ये जो गाना है ए मेरे वतन के लोगों, जो लता जी ने गाया था, was actually something that was performed in 1963, right after 1962, and कहीं ना कहीं वो एक solid connection. तो जब मैंने ये ट्रेलर देखा, it took me back to that song, so just wanted to share that with you because that's how we know our history, right? हमें अपनी हिस्ट्री अक्सर फिल्मों से ही पता चलती है। I'll take you to the next comment. This is really fun. रतन शर्मा ने कहा, people should support actors like Abhay Deol. So ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अभय देओल, have you read comments? इतने खुश हैं लोग to see you on the screen again. What is the reception been like fans की तरफ से, बता सकते हैं? I is little scared to read comments. Not that I don't, मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। इस शो को लेकर अभी तक मैंने पढ़े नहीं है, but now that I'm hearing what you're saying, I think I'm going to go immediately and see what they're saying. Of course, मैंने अपने Instagram पर पोस्ट किया है, वहाँ मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, क्योंकि वो मेरा प्लेटफॉर्म है। YouTube पर जाकर मैंने इतने नहीं पढ़े हैं इस वक्त, but I will go and see. I was planning to go see. Actually, funny you mention it. मैं करने ही वाला था। चलिए, तो maybe you'll actually get a reply back. क्या पता, इनका अब दिन बना दें। रतन शर्मा, wait for that comment back from Abhay Deol. All right, the next one is also interesting. We know for a fact that ये असली घटना पर आधारित हैं, but of course एक creative liberty ली गई है। लेकिन I'm going to echo the sentiments of everybody on that YouTube trailer comment link, right? वहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि जब हमें पता है कि शैतान सिंह थे, तो अब ये सूरज सिंह क्यों हैं? तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि अगर आप एक इंस्पायर्ड सीरीज बनाए, तो क्या हो सकती है वजह टू एक्चुअली डिविएट एंड डू समथिंग व्हिच इज प्रोबेबली फिक्शनल? मुझे बताइए।
Well, essentially, we've taken the incident, which is true, Yeah. and then we've not gone into the private lives of the individuals. Yeah. But it's not a very stretch of the imagination what a soldier goes through, what people go through in a war. Mm, mm, And I think that's what makes this show more relatable to somebody from anywhere in the world. Because when you go to war, you get separated from your family. You don't know if you're going to survive. yeah. You have an impact on the community. And we focused more on the human story that could be relatable to one and all instead of going into the private lives of the specific individuals involved in that war. बिल्कुल बिल्कुल जो कहानी है आई थिंक कहानी इतनी बड़ी है और कहानी इतनी यूनिवर्सल है कुछ चीजें हैं जो मैंने नोटिस की जैसे कि द स्टोरी इटसेल्फ 120 थे और उनके खिलाफ 3000 थे तो कम है लेकिन किसी से कम नहीं अनूप आई लव टू हियर योर साइड ऑफ दिस एज वेल क्या कहानी यहाँ पर जीतनी चाहिए थी इसीलिए ये किया गया था जैसे अभय ने भी कहा कि ये कहानी सिर्फ वॉर की बारे में नहीं है कि वॉर कैसे हुई क्या हुआ वॉर की डिटेलिंग के अलावा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो किरदार थे जो लोग थे इसीलिए इसे सिर्फ इंस्पायर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें नहीं पता कि जो रियलिटी में जो फौजी उस वॉर में थे उनकी अपनी जिंदगी पर उनकी पर्सनल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट था उनका पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड कैसा था उनका अपना रिलेशनशिप कैसा था अपने लोगों के साथ अपनी फैमिली के साथ तो वॉर एक सेंटर पॉइंट है उसके इर्द गिर्द ये किरदार बने गए हैं इसलिए ये कहानी थोड़ी इमेजिनरी है ताकि हम उस इमोशन के साथ खेल पाए ताकि हम लोगों को बता सके जैसा अभय ने कहा कि एक फौजी की फैमिली पर क्या गुजरती है फौजी पर क्या गुजरती है वो भी प्लस उसके आसपास जो लोग उसका इंतजार करते हैं जब वो वॉर पर चला जाता है उन पर क्या गुजरती है ये कहानी उन इमोशंस के बारे में भी है बहुत बढ़िया प्रणव वैष्णव ने कहा है एक्चुअली कटाक्ष उठाई है इस बात पर कि पीएलए ऑफिसर हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं एक्चुअली ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है the way we treat people who are not Indian in our Indian series क्योंकि जब हम नार्कोस देखते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है क्योंकि हमें बिल्कुल भाषा नहीं पता लेकिन हम सबटाइटल्स के साथ काम चला लेते हैं अगेन एज अ कॉल अभय तुम्हें लगता है कि ये करना क्यों जरूरी है हमारे इन वेब सीरीज में well डिपेंड्स जैसे कि अगर आपने कोई अमेरिकन फिल्म जो लेट्स से फ्रेंच रेवोल्यूशन पर बनाई गई है अक्सर ये होता है कि वो अंग्रेजी ही रखते हैं यू जस्ट प्रिज्यूम कि वो फ्रेंच बोल रहे हैं लेकिन क्योंकि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए बनाई है ये फिल्म तो हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो ये भी कर रहा है वेस्ट इट्स नॉट लाइक दे हैवंट तो सिमिलरली हमने भी वही किया है कि हम एक हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं तो वी हैव टेकन दैट सिनेमैटिक फ्रीडम क्रिएटिव लिबर्टी एक ली है टू कीप द लैंग्वेज इन हिंदी ऑलराइट ताकि ज्यादा लोग समझ पाए शायद एंड दैट कुड बी द रीजन एज़ वेल yeah exactly एक मैं जानती हूँ कि चैंग हमारे साथ नहीं है आज लेकिन इनविंसिबल इंडियन ने कहा है कि व्हाट इज दैट मियांग चैंग वाओ अपने छोटे शहर का लौंडा आगे निकल गया है कॉमन बॉय फ्रॉम अ स्मॉल सिटी ऑफ धनबाद जो इंडियन आइडल भी बने और अब वो अपने एंसेस्ट्रल रूट्स प्ले करें मतलब गिव इट अप फॉर चैंग गाइस कम ऑन Yeah, he's a wonderful actor, a great human being. He really is. I really liked working with him. Anup, waiting for your, 2 words for Chang as well. Chang का और मेरा ये है कि coincidentally 2-3 बार ऐसा हुआ shoots में कि जो हमारी वैनिटी जो थी उसके बीच का जो डोर था इस तरफ चैंग होते थे और इस तरफ मैं होता था और मेरे लिए सबसे मजेदार बात ये थी नॉर्मली आई लव म्यूजिक एंड आई लव हियरिंग म्यूजिक व्हाइल गेटिंग द मेकअप डन तो मैं प्ले करता हूँ कुछ ना कुछ अपने फोन में मेरी प्लेलिस्ट जो है लेकिन जब चैंग होते थे ना तब नहीं करना पड़ता था बिकॉज चैंग यूज्ड टू सिंग इन द अदर रूम तो मैं चैंग को नॉक करके बोलता था मैं रूम खोल रहा हूँ Oh, I wish I had Chang in the next room as me. तो ये 2-3 बार ऐसा हुआ और कहीं ना कहीं लकीली आई वुड से दैट उनकी चॉइस और मेरी चॉइस मैच कर गई म्यूजिक की और लाइकिंग फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ सॉन्ग तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहता था जब चैंग मेरे साथ होते थे कमाल है the advantages of having an Indian idol being on the other side of the vanity मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है अरे आपको नहीं पता एक और एक्टर है हमारे इस टीम में जो इस वक्त इंडियन आइडल पे छाए हुए हैं उनका नाम है पवनदीप जिन्होंने इसमें रडार का कैरेक्टर किया है बिल्कुल आजकल तो छाए हुए हैं पवनदीप बिल्कुल बिल्कुल अब आप बोल रहे थे I just think कि वो बहुत humble है Chang. That's what I liked about him. बहुत down to earth है, which is refreshing.
Yeah. Another comment coming in on YouTube is that हाय हाय हमारे देव डी के देव और चंदा वापस आ गए हैं. That I was expecting. वो मैं expect कर रहा था. है हाँ ना जी. है ना है ना. I Please. was hoping कि बोलना तो चाहिए किसी को. How cool was it? Was it the first time देव डी के बाद you guys were cast together? Is that true? हाँ. है ना? देवडी के बाद पहली बार हम कर रहे पहली हैं बार है काम. ना. And ये reunion कैसा था? Was it like ए तुम्हें याद है वो दिन? I mean, of course, we met in the middle. मुलाकात तो हो गई है यहाँ वहाँ. Not very often, पर कभी कभार हो चुकी है. वो गोवा भी आती है बहुत. माही उसका भी घर है वहाँ पर. बट जब मैंने सुना कि अच्छा माही कर रही है रोल, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था क्योंकि एक फैमिलियरिटी है. दोस्त है मेरी. हमारी जो फिल्म हमने एक जो फिल्म बनाई थी, छोटी सी फिल्म जो थी, वो काफी दूर गई. एंड सो इट वाज नाइस. आल्सो बहुत टाइम बीता है इस फिल्म के बीच और ये शो के बीच. तो how has she evolved as a person? How have I evolved as a person? So yeah, it was overall a good experience and it was like old times again. वो बिल्कुल नहीं change हो गया, you know, like I feel like वो same person है जो थी 10-12 साल पहले. And yeah, we just took it off from where we left. बहुत ही बढ़िया. You know, ये मुझे पता है कि I don't care if boys don't cry during rom-coms. You know, ये बहुत ही एक gendered reaction हो सकता है. लेकिन एक चीज मैं जानती हूँ कि जब patriotic, you know, वेब सीरीज या फिल्में आती हैं, तो मैंने मतलब इतने स्ट्रॉन्ग मर्दों को ऐसे फूट फूट के रोते हुए देखा है. So मुझे जानना है Abhay and Anup, आप दोनों से, was there that reaction जहाँ पर lump in the throat, you know, while you were either reading the script या फिर आप इसे perform कर रहे थे? How emotionally were you also there while making that performance? मुझे बताइए. The script has a lot of moments. Yeah, Anup, you've read it. I mean, there's so many. है ना? It's a मेरे लिए war बहुत drama. सीन भी था. अभय ने तो खैर, अभय is playing a very very important role in the series. उनके पास तो बहुत सारे ऐसे मौके थे. लेकिन मेरे पास एक सीन था जहां मैं अभय माही के पास जाता हूं and his daughter and I have just disclosed, मैंने वो बात बताई है कि मेजर सूरज जो हैं वो अब नहीं रहे. Yeah. You're not supposed to say that. Give that away. पता है, हिस्ट्री पढ़ी है सबने. Anam, where are you, Anam? Look what he's doing. Oh my God. I believe you're not supposed to. Sorry, I could be wrong. Yeah, actually, this has been a most interesting show to like talk about because there's so much we can't talk about. So, but इमोशंस की ही बात है सारी की सारी, you know. एक वाइफ के लिए जब हस्बैंड वॉर फ्रंट पे जाता है, वो उसका इंतजार करती है. बच्चों के लिए उनके फादर जो है उनके पास नहीं है, तो यही होप होती है कि सही सलामत वापस लौट कर आ जाए. तो ये कहानी बेसिकली मैं कहूंगा वॉर फिल्म से ज्यादा ये एक इमोशनल कहानी है. वॉर सोल्जर्स के बारे की इमोशनल कहानी. मुझे बताइए कि when it comes to just the story of the valor and just this story itself, like I'll tell you my moment, you know, जब मुझे पता चला कि and thanks to the series and the trailer, मुझे पता चला कि you know canvas shoes का इस्तेमाल किया गया था. You know, these are those small things that make you go like what, like you know, हमारी sports में भी यही हाल है, war में भी यही हाल है. हमारे पास होते नहीं अच्छे जूते यार, ऐसे क्यों होता है? You know, it's weird because you see this like what is it about that story that I think got you the most in the gut, you know, just in terms of the story itself? Abhay, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, outside of the entire emotional angle with the family and the Jawans and all of that, कहानी में ऐसी क्या बात थी? Was there that like one thing that you said, wow, you know, I want to be part of this क्योंकि ये थोड़ा सा unbelievable है यार, कैसे कर लिया इन लोगों ने? वही जो एंगल इस शो ने लिया है, जो फिलॉसफी ये शो दिखा रही है कि I'm not pro war. मेरा मानना ये है कि war is not a solution, you know, to anything. और वॉर का इम्पैक्ट जो है it's tragic. तो उसको हाईलाइट किया गया है शो में. परिवार को हाईलाइट किया गया है, कम्युनिटी को हाईलाइट किया गया है, एनिमी को भी कुछ एम्पैथी से दिखाया गया है, because it's not about country and machismo, you know, it's about humanity and loss. So I think वही एक खासियत थी इस कहानी में जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी. Yeah, that's the most beautiful thing, simply because if you think about it, some of the best, you know, war films, चाहे वो Schindler's List हो या कोई और फिल्म हो,
actually that's what it is about. It's never about the war. It's always about the loss. Exactly. Exactly. Yeah. But I love the approach. जब आप कहते हैं कि it's not supposed to be patriotic in that sense of rah-rah, machismo, jingoism. I think that's refreshing. And I do hope that, we're left with that, because हमें, as I said always, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है. And just to watch this story, come alive with such a fabulous cast, that's the reason why I'm going to watch 1962 War in the Hills. मुझसे बात करने के लिए मेरे शो पर बहुत बहुत शुक्रिया. And until the next time we meet, I wish both of you all the best. And Abhay, call me, call me. I will. I have you on speed dial.